Hello everyone, this is Ashmita from Saurav's classes. Here we are going to solve questions from the Civil Services Examination of this year. Now we are going to have a detailed discussion, so I will be doing 3 to 4 questions in today's class, and in a series of videos I will be solving all the questions from this year's question paper. So yeah, let's get started. Here we are starting off with question number 25. Now okay, before starting the discussion, let me tell you, if you are preparing for any kind of entrance exams or any kind of competitive exams, then you can join our classes. If you want to have live lectures, recorded lectures, portal access, study materials, or any kind of doubt clearing sessions or mock tests, anything for that, for a guidance, for proper guidance, you can join our classes. उसके लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे हमारे वेबसाइट लिंक्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सभी दिया गया है. डू कॉन्टैक्ट अस. एंड इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो या फिर क्वेश्चंस हो, देन पोस्ट योर कमेंट्स डाउन बिलो. लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन. कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स. यहाँ पे कुछ मार्केट्स का नाम दिया गया है. गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट. And after this, the question has been asked, how many of the above are included in the capital markets? इनमें से कौन से capital markets में included हैं? तो options में से आप देख ही रहे हो कि options में only 1, only 2 ऐसे लिखा गया है. तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे about the different types of markets. तो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट से स्टार्ट करते हैं. गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट्स आर लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज, ओके, which is issued by the government and that is used to finance its expenditure. Means government expenditure को finance करने के लिए ये बॉन्ड मार्केट है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डेट सिक्योरिटीज का मार्केट है. So they are typically traded in the capital market and therefore it will come under capital market only. मतलब government bond market actually में capital market के अंदर ही आते हैं. Okay. Next we have the call money market. कॉल मनी मार्केट. कॉल मनी मार्केट का मतलब है कि एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ फंड्स का एक मार्केट है. एंड दिस मार्केट डील्स विद द शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो इट इज़ अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वी कैन से. मतलब कॉल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट. तो यहाँ इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मनी मार्केट के अंदर ही आता है and this is not a part of the capital market. चलिए नेक्स्ट वन है ट्रेजरी बिल मार्केट. ट्रेजरी बिल मार्केट क्या है? ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 year. ओके, ये है ट्रेजरी बिल्स का मतलब. एंड कॉल मनी मार्केट के जैसे ही दिस इज ऑल्सो अ मनी मार्केट. ओके, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर दिस इज ऑल्सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट. ओके, नेक्स्ट वी हैव द स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे शेयर्स ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड. ओके, सो दिस इज अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट वी कैन से. स्टॉक के ऊपर स्टॉक के यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैपिटल. सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट. सो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी 2. यहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट है और जो स्टॉक मार्केट है लास्ट वाला, मतलब ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4, ये दोनों इंक्लूड किया जाएगा अंडर कैपिटल मार्केट. सो वी आर सिलेक्टिंग ओनली 2 एज द आंसर.